Hello everyone. Very good afternoon to all of you. Welcome to Unacademy, the largest e-learning platform in India, and you are watching Unacademy OPSC. My name is Samrat Keshari Mishra. I have started discussion regarding agriculture. Agriculture upare हम extensive discussion start करथिले. Now we'll start discussion. We'll continue the same discussion. पूर्व क्लास रे हम आज डिस्कशन करथिले स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 ऑब्जेक्टिव एंड द समरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव आई हैव डिस्कस्ड. Now I will discuss about the KALIA योजना. KALIA योजना ऊपर समस्त सुनिथिबे. यार फुल फॉर्म होछि कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. ये दिसंबर 2018 में ये स्कीम आसीथिला एंड बेसिकली ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कहा को करिया पई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मानको शेयर क्रॉपर मानकू लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड मानकू प्रोवाइड करिया पई प्रॉमिस करथिला एंड टोटल 75 लाख फार्मर फैमिली they will directly be benefited out of this scheme. Objective देखिबा हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव आर कोन थिला. द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द योजना इज टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर द लैंडलेस जो मानको पाखरे निजर लैंड नाही दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ सम अदर्स लैंड से मानको पई ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड करिया को चाहतला. सस्टेनेबल लाइवलीहुड कहले कोन बुझंती ये कंटिन्यू होई के रहबो. लाइवलीहुड माने से मानको प्रोवाइड करा जीवो जॉब रहिबो से मानको पाखरे फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड. एमति नै कि 8 दिन 15 दिन पई से मानको काम मिलला तापर पुनी काम मिलबो. रादर द लाइवलीहुड प्रोसेस द एंटायर प्रोसेस विल बी सस्टेनेबल वन. द नेक्स्ट इज द एम्पावरिंग फार्मर्स. फार्मर मानकर एम्पावरमेंट हवार आवश्यकता रही. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड. Which type of empowerment is required in case of the farmers? They needs to be financially or economically empowered, and their empowerment through providing them knowledge रा आवश्यकता रही. Because in the last class I discussed there is development of the skill of the farmer is required. That is need of the hour. Apart from the skill development, what we need integrated farming, and these things in integrated farming, skill development, all these things they require a certain level of certain quantity of knowledge, and we can provide knowledge to the farmers so that they can be empowered. The next is the financial empowerment or economic empowerment. Economic empowerment can be given to the farmers by providing them small basically to the small and marginal farmers we can provide the credit facility and with a very low rate of interest. Basically what happens, the farmers they take loans from the money lenders and from others, especially from the unorganized sources, and the rate of interest charged upon them is very high. So high rate of interest रे मानको लोन नहीं थांती, so that later on that leads to indebtedness. So माने तक लोन को repayment करी पारंती नहीं, and finally there is financial burden, there is financial tension, and many times either they will migrate from the rural to the urban zone or they will commit the suicide. Evil issues हमें देखुतले. So that is a financial empowerment of the farmer is a must. The third is to create a robust, dynamic and complete database of Odisha's agricultural workforce. ये कहूँ कि गोटे डायनामिक डेटाबेस क्रिएट करिया पई. व्हाई कोन पे हमको डेटाबेस दरकार? बिकॉज़ हमको पॉलिसी बनेबार अछि. पॉलिसी इज always based upon the relevant information, and the information should be 100% correct, because जति के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जीवो पॉलिसी मेकर मानको जति से इन्फॉर्मेशन ट्रू न थाए बा ठीक भाव रे तते को रिप्रेजेंटेशन न करा जाय, देन ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू लूपहोल्स इन द पॉलिसीज. ठीक भाव रे पॉलिसी फॉर्मुलेशन बा मेंटेनेंस हेई परिबो नाही. ये कुछ कि ओडिसा रे जो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स अछि, ये वर्कफोर्स को हमको रोबस्ट करियो माने वर्कफोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पय हमको गोटे डेटाबेस क्रिएट करियो पड़ियो. जो डेटाबेस रे ये कंप्लीट डेटाबेस रहइबो. एथिरे हमको कोन प्रोवाइड करा जिवो ना वर्कफोर्स रो डिटेल्स कोन करा जिवो उचित, सो दैट सेही अनुसार पॉलिसी मेकर माने फॉर्मुलेशन करिवे, रूल एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करिवे, एंड वी कैन हैव अ वेलफेयर स्टेट. The next is the last mile financial connectivity will be streamlined. Last mile means the final resting place.
को जगह फाइनाली फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल कनेक्टिविटी केते दूर पहुंचुची मानक पाखु केते दूर मानक पाखरे इन हम क्रेडिट पहुंचे परचंती सो दैट क्रेडिट थिले तो ये इन्वेस्ट करियो फार्मर एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट दे आर बोथ आर को रिलेटेड मोर द क्रेडिट मोर विल बी डेफिनेटली द इन्वेस्टमेंट सो केवल क्रेडिट देले हबनी रादर along with financial credit we need to provide them financial awareness so that they can manage the fund जति कि टंका तम क्रेडिट अमाउंट दिया जाउची सेटा को मैनेज करि परिबो कोटी केति यूज होबो कोटी केति यूज न करा जाओ. The next is the update and sanitization of the land record. Land record को update करिया दरकार because वर्तमान देखुथिबे issues there are many issues which are associated with the land reform related कि जनक गोटे जमी थिबो से 3-4 जन को नारे थिबो जदि हम ताको डिजिटलाइज करबा डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन पोर्टल थ्रू रे जदि हमें इनफॉरमेशन बाहर करि परिबा लैंड रिकॉर्ड रिलेटेड बा जनकर जमी रिलेटेड देन डेफिनेटली ये हेल्पफुल हबो फार्मर पई प्लस ये जो फ्रैगमेंटेड जमी पड़थे फ्रैगमेंटेड लैंड पड़िथाय फार्मर जदि हम को कंसोलिडेट कर गोटे जगह रख परिबा देन ताल मते ये helpful रहिबो. The next is to spread awareness and synergizing the extension system. ये कुछ awareness create करबा दरकार को मानक भितरे among the farmer community we create the awareness ठीक अछि and extension different type of extension family extension कोंतु educational extension कोंतु skill based extension कोंतु so every type of extension system is required for the development of the farmers. The next is the monitoring and evaluation of the Yojana, KALIA Yojana. Monitoring and evaluation, why is it required? Because in each and every policy there is a phrase, there is a phase where monitoring and evaluation is required. So policy formulation different step है, different फेज थाए तो फर्स्ट फेज रे पॉलिसी हमको जानियो को कि हमर स्पेसिफिकेशन कोन हु आर द टारगेटेड ग्रुप्स हमें कहा को डेवलपमेंट करिया चाहउतंती तापरे हमें ताको लिस्ट आउट करबा कि कोन डेवलपमेंट करि परिबा तापरे हमें लिस्ट आउट करबा कि डेवलपमेंट को वेयर करि परिबा डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस अवेलेबल व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्स दैट वी हैव ये सब जिंस को कंसीडर करिला परे हमें गोटे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करंती एंड फाइनली केवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन कले हबनी पॉलिसी फॉर्मुलेट कला परे हमें ताको इंप्लीमेंट करिया को पड़िबो एंड आफ्टर implementing that we need to monitor and to evaluate the policy as well जेहेतु कालिया योजना एठी गोटे पॉलिसी देखुचंती तो ये योजना को हम गोटे मॉनिटर करिया को पड़िबो ताको इवैल्यूएट करिया को पड़िबो कि वेदर ये योजना ठीक ठाक काम करछि ना नाही सुनिथिबे किछ दिन तळे कि जो माने बेनिफिशियरी नहंती दोज हु आर नॉट द ट्रू बेनिफिशियरी एमान को पाखु एमान को मिल जायतला इंफॉर्मेशन ठीक अछि. हरेंद्र इज सेइंग हिंदी लैंग्वेज में बोलिए सर कौन सा लैंग्वेज है ये. हरेंद्र एक्चुअली दिस क्लास इज फॉर द OPSC preparation. This is for Odisha PCS exam. So that is why the language used in this class will be English as well as the vernacular language, that is Oriya. If you are preparing for OPSC, then there is a compulsory paper Oriya language, then you need to understand. And if you are not preparing, then this is not the right platform for you. Jodi alga kichi pai preparation korthun then Unacademy UPSC channel ko you can subscribe where you will be getting all the classes in English as well as in Hindi. Next, so policy formulation, policy ro process ko hame discuss karuthile. So regular monitoring and evaluation of the Yojana is required because इवैल्यूएशन हमको एथि पई दरकार त पॉलिसी फॉर्मुलेशन करंती पॉलिसी फॉर्मुलेशन कले खाली होबनी ताको इवैल्यूएट कले हम जानि परबा को जगह लूप होल्स रहिला को जगह अधिक टिके डेवलप होबा दरकार को जगह आउ कोन असेसमेंट हम करि परबो सो फॉर दैट पर्पस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. द नेक्स्ट इज अवार्ड एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द सक्सेसफुल बेनिफिशियरीज. जो माने कालिया योजना अंडर रे सक्सेसफुल बेनिफिशियरी एमान को पई हम तंग अवार्ड प्रोवाइड करबा एंड तंग रिकॉग्निशन दबा फॉर देयर सक्सेस so that ये जो एक्टिविटी हम करबा it will promote what it will promote more entrepreneurship more development in the field of agriculture. ये लोक मानकर परसेप्शन चेंज करबो एग्रीकल्चर आडको जेमती एग्रीकल्चर गोटे सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस थिला एमती हेबनी एग्रीकल्चर गोटे डेवलप्ड वे रे डेवलप्ड अप्रोच लोक माने अप्रोच करबे so that modernization of the agriculture can be done and more income can be assured to the farmers. So this is all about the important Krishak assistance for the livelihood and income augmentation, are most famously known as the KALIA Yojana. The next topic to be discussed is women in agriculture. I have given a question and I have discussed within the framework of that question.
framework bhitor re discussion karibi. Advocacy for the women's rights and gender sensitization is at the very core developmental approaches today. What measures should be taken to empower women in agriculture? What measures should be taken to empower women in agriculture? This question is definitely related to women empowerment, but this is a specific question. The question is related to women empowerment in the field of agriculture, not the women empowerment in each and every aspect of society or in each and every aspect of the economy. Let's discuss कौन solution हमारा दरकार women मानु का केमती important करि परिबा. The first is women will be the important project partner in the agricultural development, because see the total population there will 50% of the women are there and 50% men are there. So as they belong to a significant portion of the society, significant portion of the population, for that purpose in each and every agricultural development there should be a partner, and then their capacity building should be done and emphasis should be given to capacity building of the women. केमती हमें women empowerment करि परिबा, because समान तांगर गोल देखिबा पड़ियो empowerment of the women. समान जेतोला गोल रहिबो गोटे किछि fixed goal एठी पहुंचवार अछि, so to achieve the goal women will learn something, so we can do the capacity building of the women. Capacity building केमती करि परिबा? By providing training, by developing the skill, by providing discovering the new equipments, women friendly farm equipments. तो farm रे equipments use होची जेमति सब ट्रैक्टर हैला, पावर टिलर हैला बा अलगा किछि हैंड इक्विपमेंट्स हैला, हमें एमति किछि इक्विपमेंट व्यवहार करिवा बा ताको यूटिलाइज करिवा जेमति सेटा वुमेन फ्रेंडली हेतिबो, वुमेन माने ताको इजीली यूज करि पारथिबे. सो वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट इज अ मस्ट. देन द कोऑपरेशन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर. The cooperation of the directorate of the research on women in agriculture, ये cooperation रहवा दरकार, because ये facilitate करिवो gender analysis करिवो, gender sensitization करिवो, plus women मानकर development केमते agriculture field रे specifically ही परिवो या ऊपर ये organization काम करिवो. Then gender analysis and gender sensitization all the agricultural developmental approach. Gender sensitization in all the developmental approach. जेतोले development होची especially in the field of agriculture, आमे हिसाब करिवा कि ताकू include करिवा women मान को. women मान जदि included होंती ताले कोन benefit of the society. उसी जो women माने those who cannot do the white collar job, जो माने बड़ जॉब करि परिबेनी, जो माने एग्रीकल्चर रे अछंती ऑलरेडी पूर्वरु सेमानंकु एग्रीकल्चर सेक्टर रे रहबा द्वारा सेमानकर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होची. बिकॉज़ जेतोले गोटे मनिष निजे काम करे, निजे इनकम करे, सेतोले तार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुए. एंड द रियल एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी इज द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. जे पर्यंत इकोनॉमिक एम्पावरमेंट न होइची से पर्यंत रियल एम्पावरमेंट हेइ परिबो नाही. The next, the capable women SHGs will be given preference. Self-help group को इटे preference दिया जाउची. What should be the reason? Because we are doing participatory governance, participatory democracy we have. तो वुमेन मानु को हेल्प करिया पई, से मानु को इन्वॉल्व करिया पई, से मानु को प्रमोट करिया पई सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करा जाय परिबो. प्लस एसएचजी मानु को सब कैपेबल करा जाय परिबो, जा द्वारा से माने एग्रीकल्चर सेक्टर को अडॉप्ट करि परिबो बा एग्रीकल्चर सेक्टर रे काम करि कि निजे एम्पावर्ड हे परिबे. Then if they come forward to deal in the agri input कहले एग्रीकल्चर करिया पई जहा इनपुट दरकार से इनपुट रिलेटेड जदी वुमेन इंटरेस्टेड अछंती एग्रीकल्चर रे बा इंटरेस्ट क्रिएट करा जाय कि जदी करा जाय पारुची, देन डेफिनेटली हम कहि परिबो कि वुमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रे ही पारुची. The next is adequate steps will be taken to provide agricultural credit to the women farmers. या ऊपर हम कोन करि परिबा जेमती रेट ऑफ इंटरेस्ट. बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट जति कि रुहे जदी वुमेन कैंडिडेट मानको देखिबे होम लोन, जदी गोटे वुमेन अप्लाई करूची होम लोन पई कहले टिके लेस रुहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रुहे. इन द सेम वे क्रेडिट फैसिलिटी हमें टिके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जदी प्रोवाइड करिवा, देन डेफिनेटली ये भी हेल्पफुल हबो वुमेन मानक पई. So that say in credit or easily मिली परिबो. credit easily मिलेले they will invest that in the field, in the agriculture sector से माने इन्वेस्ट करिवे. इन्वेस्टमेंट कला परे definitely agriculture सहित से माने agro entrepreneur हे जिवे. Next is the young women in the countryside will be provided suitable training in post harvest management and food processing so that they can augment their income. The most important point, I repeat, this is the young women in the countryside, they should be provided with the post harvest management as well as the food processing techniques. Why food processing? In the last class I discussed that food processing is very important because basically maximum foods they are perishable in nature. गोटे particular time period पर से food गुडा को नष्ट हो जाते.
वेजिटेबल्स नष्ट हो किसी दिन पर तो रादर हम ताको प्रोसेस करिया पड़िबो ताको स्टोरेज करिया पड़िबो तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज अ मस्ट ताको हार्वेस्ट कला परे ताको मैनेज ठीक भाबरे न करा जाउची देन देयर विल बी प्रॉब्लम सो से मानकर इनकम बढ़िया पई इनकम को इंक्रीज करिया पई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहतु फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कहतु बा केमती से माने प्रोसेसिंग पर तक मार्केट रे बिक्री करि परिबे से विषय कहतु ये सब जदि वुमेन मानको सिखेबा देन डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट हे परिबो these are the steps the women in agriculture related कौन सी क्वेश्चन आसुची ई सब टॉपिक को डिस्कस करिवे ये स्पेसिफिक टॉपिक वुमेन इन एग्रीकल्चर जो मेंस देबे से मानक पई इंपोर्टेंट वुमेन इन एग्रीकल्चर कालिया योजना जेमते हम पढिले लास्ट टाइम ओडिशा गवर्नमेंट रो स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी मु डिस्कशन करथिले 2013 रो पॉलिसी इन द वेरी लास्ट क्लास जोटा आज मॉर्निंग क्लास रे डिस्कस करथिले तो वर्तमान आ गोटे इंपोर्टेंट पॉलिसी डिस्कस करिवे समृद्धि योजना समृद्धि एग्रीकल्चर पॉलिसी 2020 इट वाज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तो यहाँ पर मैं डिस्कस करी समृद्धि योजना ऊपर पूर्व जो मैंने अनअकैडमी प्लस रे नहंती तमे सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग द रेफरल कोड EasyOS use this referral code EasyOS so that you will be getting 10% discount of your course fees जति कि आपनकर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहइबो सेतरे 10% डिस्काउंट 10% ऑफ पाइजिवे ये रेफरल कोड जति यूज करछन्ती So 30th November ru nuwa course launch hochi the course is related to your OPSC preparation ये ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम पाई प्री कम मेंस बैच रहइबो there are many capable educators from Unacademy those who will guide you those will help you in your preparation journey so माने join करि पारो Unacademy plus को निजर preparation को continue करिया पाई and OPSC exam qualify करिया पाई in that batch so OPSC batch रे मु इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट रो टॉपिक पढेबी पूर्वरु इस सब्जेक्ट को मु सामर्थ्य एंड समीक्षा बैच जे एसओ और ओएस एग्जाम पाई अछि both for high court and secretariat ASO and OPSC रो OS एग्जाम जोटा सिविल सर्विस एग्जाम हमरो ता पाई मध्य मु कोर्स कंप्लीट करि सारी छी 30th नवंबर रु न्यू बैच लॉन्च होची जोतिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट सब्जेक्ट मु पढेबी So description box रे complete information दिया जायछि Unacademy related how to join Unacademy how to use the referral code इस सब विषय दिया जायछि so आपण description box रो complete explanation देखि परिबे The next is now let's discuss the Samruddhi scheme. Samruddhi this is an agricultural policy in 2020. यार focus होची farmers well-being, farmer मानकर development, farmer मानकर capacity building, केवल agriculture नुहे rather allied agriculture sector रे farmer माने केमती काम करि परिबो से मानकर income केमती augment हे परिबो increase हे परिबो या ऊपर समृद्धि scheme discuss करछि समृद्धि देखंत समृद्धि रो फुल फॉर्म कोन रही छि द फर्स्ट द लेवरेजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी leveraging science and technology कौन पाई ये science technology ऊपर डिस्कशन करूछि because the use of science and technology is a must in case of agricultural development we need to use mechanical technology in terms of tractor in terms of power tiller harvester cutter याकू यूज करि परिबा मेकानिकल टेक्नोलॉजी हिसाब रे बायोटेक्नोलॉजी हिसाब रे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करि परिबा केमिकल टेक्नोलॉजी रे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वीडिसाइड यूज करि परिबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिसाब रे इनाम डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप इंस्टॉल करि परिबा फार्मर माने सो दैट दे कैन गेट मेटेरोलॉजिकल डेटा दे कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट अबाउट द प्राइस throughout different states of India so that the farmer will be empowered so use and integration of the science and technology for the development of the agriculture is a must so for that purpose in the Samruddhi scheme the very basic or the first pillar is to leverage the science and technology the second one is adaptation to the climate change climate change is in today's time period is a cause of concern for the entire farmer community and for the all the geographers scientists and other communities of the earth as well so climate change को हमें केमती अडॉप्ट करि परिबा जेहेतु ग्रेजुअली क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हे चलछि एंड ग्लोबल वार्मिंग कोंतु बा एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज अपन एग्रीकल्चर कोंतु ये जेमते पड़ी पड़ी चलछि एग्रीकल्चर ऊपर जेमते एडवर्स इंपैक्ट पड़छि एथुर केमते हम बाहर को आसी परिबा बा क्लाइमेट चेंज को हम केमते अडॉप्ट करि परिबा जेमते फार्मर ऊपर किछि इंपैक्ट न पड़े फाइनेंशियल बर्डन पड़िबोनी बा आउटपुट रे कमी रहिबोनी आउटपुट जति कस्तला सेति आसीबो प्रोडक्शन जेमते होतला सेमति होबो तो ए अनुसार हमको कोन करिया पड़िबो क्लाइमेट चेंज को फार्मर को अडॉप्ट करिया पड़िबो the next is the
market upare mu completely discuss karichi. Market can be divided into two types, this domestic market and the global or the international market. In the domestic market means the movement of the goods inside India. In global market means international movement of the goods and services. So basically agricultural production को produced material को हमको कौन करिया पड़िबो ना international market रे बिक्री करिया पड़िबो to increase or to have the export led agriculture service. एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट लेड करिया पई, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री रे परिणत करिया पई हमको गोटे हेल्दी मार्केट रो रिक्वायरमेंट रही और हेल्दी मार्केट हम कोठु पाइबा, हेल्दी मार्केट को हम एक्सेस किमती पाई परिबा, डोमेस्टिक मार्केट को एक्सेस करिया पई फार्मर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करि पारे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पई एक्सिम बैंक अछि एंड अदर गवर्नमेंट रो अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अछंती दोज हु विल हेल्प द फार्मर कम्युनिटी टू सेल देयर प्रोड्यूस्ड मटेरियल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो बाहर भी हमें बिक्री करि पारिबा. द नेक्स्ट इज द रिसोर्स यूज एफिशिएंसी एंड एन्श्योरिंग हायर प्रोडक्टिविटी केमती फार्मर रो बढ़ी पारिबो, केमती स्किल डेवलपमेंट हेउ बा साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करी केउ कोनोसी भी उपाय रे रिसोर्स यूटिलाइजेशन करी ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करी जेमती फार्मर प्रोडक्शन को बढ़ी पारिबो. तो यहाँ पर डिस्कस करूँ समृद्धि स्कीम. द नेक्स्ट इज द अपस्केलिंग द अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर कहले एटी कोन बुझंती ना रोडवेज कोंतु, रेलवेज कोंतु, मार्केट कोंतु, या सहित जेमती कनेक्शन ठीक रहउतो कोठु ना फार्मर लैंड रु मार्केट पर्यंत कनेक्शन, फार्मर लैंड रु मंडी पर्यंत कनेक्शन, सो दैट फार्मर एठी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन पई जेमती किछि इशू फेस न करे, किछि प्रॉब्लम फेस न करे. सो अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट. द नेक्स्ट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन टू हाई लेवल एग्रीकल्चर. प्रोडक्शन जो जति के करथले ताको हाई लेवल एग्रीकल्चर को माने हम डाइवर्सिफाई करिया पड़िबो, जेमती इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऊपर डिस्कस करथिले. इन द सेम वे हमको प्रोडक्शन जहा करछि फार्मर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन करिया पड़िबो, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट आल्सो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल other allied activities like poultry farming, fisheries, goateries, ये सब करिया पड़िबो. The next is the human resource skilling. So it basically this statement refers to the development of human resource development ऊपर ये कहूची, because human resource is the important resource because that will combine all other three factors of the production, land, labor, capital, aku combine किए करियो, human resource ही combine करियो, and this is finally the human resource which will be responsible for the output, केतिके output आसुची. So upgradation of the human resource is a must. So मानकर skill development, so मानकर training provide करिवा, on skill on the job, sorry on the field training, of the field training on field ऊपर केमती यूज करिवा से माने टेक्नोलॉजी तांको प्रोवाइड करिवा, प्लस फील्ड बाहर सिमुलेशन वे केमती से माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड व्यवहार करिवे से विषय से माने प्रोजेक्टर रे देखै परिवा, हमें थ्रू शॉर्ट वीडियोस वा टेलीफिल्म हिसाब रे से माने देखै परिवा. पूर्वरु देखथिबे जेमती इन्फॉर्मेशन पई कल्याणी बोली गोटे सीरियल आस्तला संध्या रे शनिवार ना रविवार 6:30 रे दोतला पॉलिसी ए टाइप रो सब चैनल माने गवर्नमेंट चैनल ले बा प्राइवेट चैनल ले हम प्रमोट करि परिवा डिफरेंट टाइप ऑफ serials. The next is the strengthening the institutions. को institution को ये strengthen करिया पई कहूची, जो institution agriculture सहित related ताकू ये strengthen करिया पई कहूची, जेमति कि जोटी ब्लॉक बा मंडी ब्लॉक रे माने आनिबे चारा आनिबे गछ पई प्लांटेशन पई तार चारा गुडा कानिबे सेटु बा मार्केट, ये मार्केट रे प्रोवाइड करिवे नै कि समानकर बिजनेस जहा करछंती बा जहा प्रोडक्शन करछन ताकू बिक्री करिवे, बा यदि आउ किछि इंस्टीट्यूशन अछि जे क्रेडिट प्रोवाइड करछि, क्रेडिट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करिया पई कहूछि, बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हेले ही फार्मर पाखरे जहा सर्विस दरकार से सर्विस पहुंची परिबो, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ये सर्विस स्ट्रेंथन हे परिबोनी. सो स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन इज अ मस्ट. बुझी पाले समस्त. समृद्धि स्कीम रे कोन अछि, डायरेक्टली पचारिबोनी तो समृद्धि स्कीम पचारि भी पारे मेंस रे 5 मार्क रो क्वेश्चन समृद्धि स्कीम रिलेटेड बा समृद्धि रो फंक्शन कोन प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आनी पारे, बट इंपोर्टेंट फैक्ट होची एटी कि एग्रीकल्चर रो केमते डेवलपमेंट ही परिबो ओडिशा रे जदी पतारे ताले एई पॉइंट को सब डिस्कशन करिवे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को केमते यूज करा जाय परिबो, क्लाइमेट चेंज को केमते अडॉप्ट करा जाय परिबो, मार्केट रिसोर्स, अपस्केलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग, ये सब ऊपर डिस्कशन करा जाय परिबो. तो ये सब को जदी क्वेश्चन आसुची किछि रिलेटेड ताले डेफिनेटली डिस्कस करिवे. सो समृद्धि दिस इज द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ 2020 व्हिच इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. हमें तीनटा टॉपिक को एक्सटेंसिवली बर्तमान डिस्कशन करले. द फर्स्ट इज द कालिया योजना, तापर हमें डिस्कशन करले वुमेन इन एग्रीकल्चर, हाउ टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द समृद्धि स्कीम व्हिच इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. तीनटा जिंस को हमें एक्सटेंसिवली डिस्कशन करले. ये क्लास एमती कंटिन्यू रहइबो, YouTube रे क्लास अवेलेबल रहइबो, स्पेशल क्लास भी रहउची, प्लस रे भी क्लास रहउची. सो
YouTube स्पेशल क्लास एंड YouTube क्लास आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे एक्सेस करि परिबे यदि प्लस रे क्लास कंटिन्यू करबा को चाहउछन्ती कोर्स कंटिन्यू करबा को चाहउछन्ती देन the course fees is very less 7,000 for the entire year. You can use again this code EasyOS to get 10% off upon your subscription amount. EasyOS code use करूँ 10% discount पाई जिबे complete description box रो आपण पाई जिबे explanation description box रो पाई जिबे in the near future मोर एवळा कोर्स रहिबो YouTube रे स्पेशल क्लास रे Unacademy आप डाउनलोड करंतु एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन यदि कार किछि डाउट अछि देन पचारंतु बटन डाउट let me know if you have any doubt. So 30th November नुआ बैच स्टार्ट होची ओपीएससी प्रिपरेशन पई तो जॉइन करंतु Unacademy प्लस एंड कंटिन्यू करंतु प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास रे मु पुनी कंटिन्यू करिवे समृद्धि स्कीम रो ही हमें कंटिन्यू करबा एठु आगो प्लस एग्रीकल्चर रो केमति डेवलपमेंट हे परिबो इनपुट रे केमति इनपुट मैनेजमेंट करि परिबा सीड केमति दरकार इरिगेशन फैसिलिटीज को केमति डेवलप करि परिबा फर्टिलाइजर फील्ड रे हम केमति डेवलपमेंट करि परिबा ये सब ऊपर मु डिस्कस करबी एग्रीकल्चर कंप्रेहेंसिवली एटी डिस्कशन करा जिवो एंड इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज द definitely it will be helpful for the prelims as well as your mains examination. ठीक अछि जदि कार डाउट अछि कि बुझिबा पय चाहउछन्ते किछि ताले क्वेश्चन पचारि पारंत एग्रीकल्चर वंस डन देन आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इंडस्ट्री ऊपर डिस्कशन रहिबो या पूर्वरु Unacademy प्लस रे Unacademy OPSC चैनल रे आपण मोर अदर कोर्सेस मध्ये देखि परिबे सर्च करिके एग्रीकल्चर रो ये फोर्थ सीरीज या पर तीनटा सीरीज जाइछ एग्रीकल्चर 1 2 3 अधिक नॉलेज पाए पय एग्रीकल्चर रिलेटेड से स्कीम को से क्लास गुडा को गोटे गोटे सर देखि दियंतु सो दैट आपण इजीली बुझी परिबा आगो सेतर कंप्लीटली मु ओडिशा गवर्नमेंट रो बहुत गुडे स्कीम डिस्कशन करिछि प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर रे डिस्ट्रेस कोन पय होछि फार्मर सुसाइड रिलेटेड इश्यूज फार्मर माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज ये सब मध्ये सेतर मु डिस्कशन करि सारिछि. So thank you everyone, have a good day. This is all for today in this session and I'll see you in the next session.